Now, the next thing survey discusses it, what can be the growth magnets in the decade 2020 to 2030. इस डिकेड के ग्रोथ मैग्नेट्स क्या होंगे, किन चीजों की वजह से ग्रोथ बढ़ेगा। पहला जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे, हेल्दी एंड रिपेयर्ड बैलेंस शीट इन फाइनेंशियल, द एनपीएस हैव कम डाउन, हैव रिड्यूस्ड considerably, and corporate sector, as we just discussed, borrowings reduced. तो कॉर्पोरेट सेक्टर की लोन्स कम हुए, 30% से नीचे आए हैं, और एनपीए कम हुए बैंक्स के, तो अब वो अलाउ करेगा बेटर लोन देना। एफिशिएंट क्रेडिट प्रोविजनिंग, there will be more credit provisioned in the market, easy loan availability will be there, and contributing to higher growth through investment and consumption. Contribute to higher growth through investment and consumption. Invest करके और consume करके higher growth की contribution करेंगे। क्यों investment क्यों बढ़ेगा? Because the corporates are deleveraged, they have more money possibility that they can take more money, buy machines, set up new factory. Consumption क्यों बढ़ेगा? Because as corporates deleverage themselves, invest more, they will create more employment, more income opportunities, and that will lead to consumption rising. So that is why we say contribute to higher growth through investment and consumption. Contribute to higher growth through investment and consumption. Investment will increase because banks will be able to give easy loans. Investment will increase because corporates can now expand. Consumption will increase because as economic activities expand, as corporates expand, there will be more chances of creating enough jobs, more chances of consumption growth. And then digitalization reforms, that is leading to efficiency gains. That is the growth magnet that we see further. कि ये growth magnet होगा digitization, इसके वजह से growth बढ़ेगा। क्यों growth बढ़ेगा? इसकी वजह से पहला greater formalization, better reporting, transactions better report होंगे, increased saving and increased resource mobilization. क्योंकि जब formalization ज़्यादा होगा तो टैक्स कलेक्शन वगैरह ज़्यादा होने लग जाएंगे, वर्कर्स को प्रोटेक्शन देना ईजी हो जाएगा। If formalization happens, tax collection will be better, workers can be easily protected. So that is the idea. And then higher financial inclusion. Higher financial inclusion. Higher financial inclusion because of Jan Dhan, Aadhaar, Mobile Trinity. Higher financial inclusion because of UPI. Higher financial inclusion because of Bhim app. So higher financial inclusion due to digitalization. And then more economic opportunities like skilling initiatives. Why? People can train themselves digitally. People can take YouTube lectures, जैसे अभी तुम ले रहे हो. People can make sure that even if there is a skill development to be done by taking a course in software where they can be at work but take a 2-hour course every day, upgrade themselves, upskill themselves. तो reskilling possible है, upskilling possible है और new skilling possible है. ये तीनों ही डिजिटलाइजेशन से पॉसिबल हो पाते हैं। न्यू स्किलिंग मतलब कुछ नहीं जानते, नई बात सीखी। रीस्किलिंग मतलब पुरानी बात जो जानते थे वो आउटडेटेड हो गई, नई बात सीखी। और अपस्किलिंग मतलब जो बात हम जानते हैं उसके ऊपर कुछ और सीख लिए और अच्छा करने लग गए। सो ऑल दिस इज पॉसिबल with the digitalization program that we see. Then of course the survey says that another thing is evolving geopolitical situation presents opportunity diversification. Reshoring का मतलब जैसे China +1 companies shifting out of China can choose India as an investment destination. तो ये एक अच्छी बात है जिससे हम डेवलप कर रहे हैं कि जो कंपनीज चाइना से निकलेंगी वो हमारे यहाँ आ सकती हैं। दूसरा है डाइवर्सिफिकेशन। अब क्या हुआ है, सप्लाई चेन डाइवर्स हो रहे हैं, बहुत लोग इंडिया को चूज कर रहे हैं, लाइक ऑस्ट्रेलिया चूजिंग इंडिया फॉर सप्लाइंग स्टील, ऑस्ट्रेलिया चूजिंग इंडिया
for supplying pharmaceutical, Australia choosing India for supplying auto components, UAE choosing India for supplying food, UAE choosing India. हमने अभी CEPA साइन किया UAE के साथ, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड अग्रीमेंट साइन किया ऑस्ट्रेलिया के साथ. सो यू नो इन चीज़ों की वजह से क्या होता है कि हमें बेनिफिट मिल रहा है. हमारे पास सप्लाई डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है सप्लाई चेन के. इंडिया डाइवर्सिफाइंग इट्स सप्लाई चेन. Active pharmaceutical ingredients that India earlier used to buy from China, 70% of our active pharmaceutical ingredients used to come from China. Now it is less than 60% and we are developing our possibilities within the country. अब हम अपने देश में पॉसिबिलिटी डेवलप कर रहे हैं. तो ये एक एग्जाम्पल है. एक और एग्जाम्पल ले लो. टॉयज हम अब इंडिया में बनाने की कोशिश कर रहे हैं बाय मेकिंग श्योर दैट द टॉयज वी गेट फ्रॉम चाइना कैन ग्रेजुअली बी डिस्करेज. हमारे गणेश जी चाइनीज क्यों बनाए भाई? हम अपने गणेश जी खुद बनाएंगे, हम अपने शिव जी खुद बनाएंगे, हम अपने खिलौने खुद बनाएंगे. दिस इज इंपॉर्टेंट. वी नीड टू डाइवर्सिफाई टॉयज, शूज, textile. These are something that India can produce world class, and that diversification is now happening under production linked incentive scheme. That diversification is happening. That again is something which is interesting. Another thing is regionalization will drive restructuring of global value chains. ये समझना, regionalization का मतलब लोग अब डर गए हैं कि long distance जाना मुश्किल होगा. India has a wonderful shore available, so we can supply to North Africa, we can supply to West Asia, we can supply to East Asia, we can supply to Eurasia. तो हम एक बड़े अच्छे जोग्राफिकल पोजीशन में हैं जहां से हम इन सबको सप्लाई कर सकते हैं. हमारे लिए एक अच्छा समाचार और ये है, the good news for India is that countries like China or country like China, which was a big supplier of many lower end commodities like stationery, like aluminium, steel, like food products, like textile and footwear, is now graduating up. China is leaving these sectors and that will open up great opportunity for India. So that is why survey says that regionalization will drive restructuring of global value chains. So the global system, the value chain system will make sure that we have a restructured mechanism where India can be one of the favored destinations. You know, कि भारत में चीजें establish होने लग जाएं. And then of course the next part is that what should be the reform agenda we can make so that the long run economic growth remains 6% plus. ये सब तो opportunities हैं. करें क्या जिससे ये opportunity मिले हमें? ये opportunities हैं, I repeat. What do we do so that we get these opportunities for ourselves?